Hello student, Jai Swami Narayan. Our today's topic is remote sensing application in the irrigation management. In this, today we will study about the visual interpretation. After the rectification, geometrical correction of the image to the base map of the satellite data, standard false color composite is generated. Sometimes individual bands are digitally enhanced before generating the FCC, depending on the classes to be separated. On the FCC, the distributory command boundaries are identified with the help of base map and review survey maps. For various crop classes to be identified, the ground truth should be collected based on the accessibility association with the permanent land features like the road intersection, canal road intersection, aqueducts from all over the command area. Spectral signature of the major crops are identified on the FCC. Using the interpretation keys, the entire image is classified and the areas under the different classes are measured from the interpreted maps. The accuracy of the classification is checked by tallying the classified crop areas with the ground information collected at selected sites. Preferably 95% of the selected sites of a given class should have been identified at the same class. तो यहाँ पे क्या है, क्रॉप टाइप है, फॉर एग्जांपल पैडी है. ओके, तो 2 to 3 weeks after the transplantation. ओके, तो ग्रोथ स्टेज एट द टाइम ऑफ सैटेलाइट डेटा एक्विजिशन. पॉसिबल सिग्नेचर ऑन द स्टैंडर्ड एप्सिस कौन सा कलर का है, तो ग्रीनिश और ब्लैक कलर का है. देन पैडी पीक वेजिटेटिव फेज है, तो उसमें कौन सा कलर आएगा, डार्क रेड. ग्राउंड नट पीक वेजिटेटिव फेज है, स्टेट्स ऑफ शेड्स अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग रंग से इंडिकेट किया है और अलग अलग कलर से इंडिकेट किया है, उसके स्टेज के वाइज इंडिकेट किया है. तो फॉर एग्जांपल ट्रांसफर आफ्टर 2 to 3 weeks ट्रांसप्लांटेशन के बाद. ओके, आफ्टर बाद तो कौन सा कलर दिखेगा, तो ये कलर दिखेगा. देन कॉटन है, तो पीक वेजिटेटिव फेस है, तो उसको कौन से कलर से इंडिकेट होगा, तो दैट इज पीक टू रेड. तो उसपे से पता चलता है कि ये पैडी है और किस स्टेज में है. ओके, और उसका ग्रोथ स्टेज कौन सा है, तो वो कलर पे से इसमें पता चलेगा. देन डिजिटल क्लासिफिकेशन प्रोसीजर. Visual interpretation requires excessive training and is labor intensive. Further, the spectral characteristics are not always fully evaluated because of the limited ability of the eye to discern various tones on images and difficulty of an interpreter to simultaneously analyze the numerous spectral images. Hence, the digital interpretation techniques are adopted to accommodate the multi-data set and to reproduce the classification results with consistency while saving on turnaround time. The general procedure of the digital classification of the crop types groups is explained below. तो क्या है, विजुअल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि कई बार हम कलर का टोन नहीं पहचान पाते हैं, लाइट कलर है डार्क कलर के, उसी वजह से हमें जो भी डेटा हमारे पास होता है वो हम रीड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए डिजिटल इंटरप्रिटेशन का यूज होता है. ओके, तो वो उसमें क्या प्रोसीजर होता है, डिजिटल क्लासिफिकेशन प्रोसीजर क्या है, तो उसके बारे में नीचे आप उसका प्रोसीजर क्या है तो वो हमें बताया है. उसपे से हमें क्या पता चलेगा, क्रॉप टाइप कौन सा है, कौन से ग्रुप्स में है, वो सब पता चलेगा. Well distributed and uniformly fixed training areas are identified for the crops which were collected from the ground and also for other non-crop classes on the FCC.
If necessary, more than one date may be used to identify the crops with different showing times or crop periods. Statistics of the spectral signature, mean and standard deviation should be computed for the training areas. If the overlap of M and ST between any two classes is more than 25%, the training areas of those two classes may be merged or redefined. Signature should be generated again for the purified training areas and checked for separability between the classes. Maximum likelihood classification algorithm, which takes into the account the prior probability of each pixel belonging to a particular crop class defined by M and ST of the training areas of that crop and class is applied on the final signature of the different class or crop or classes. Other application algorithm like minimum distance, parallel paralleliped or combination of either of these with maximum likelihood may also be used. A portion of training areas collected from the ground which were reserved for checking the classification accuracy are used to check whether the reserved training areas of the particular crop are classified as that of particular crop or not. Classification accuracy is checked similarly for other crops or crop groups. The classification needs to be repeated if this classification accuracy for any crop is less than 90%. Then next, irrigated crop condition assessment. Many researchers have established that vegetation indicates which are ratios or differences or combination of both of the reflection near infrared and red bands are highly sensitive to the crop verdure and crop moisture state. Out of several vegetation indices, normalized difference vegetation index, which is the ratio of the difference to the sum of the reflectance reflectance in infrared and red bands, is widely used as minimize most of the atmospheric effects and the effect due to the difference in illumination geometry, making it amenable to multi-date comparisons. And DVI is a function of green leaf area and biomass and reflectiveness of the crop vision. यहाँ पे ये सब दिया है, ये आपको सब डेफिनेशन दिया है. ओके, देन NDVI analysis, crop yield estimation. The NDVI information can also be used for the crop yield estimation. Crop yield data obtained from the sources like crop cutting experiments can be used to develop a statistical model between the crop yield and NDVI. For this, the areas where the crop yield data is available are to be located on the NDVI image, and a regression type model can be developed between the crop yield and NDVI studies for the respective location. Thus, the developed model can be extended to predict the yield for the entire command area. यहाँ पे केस स्टडी दिया है. ओके, Rajoli Banda Divergent Skiing Command, okay, is an interstate project between Karnataka and the Andhra Pradesh in Krishna River Basin upstream of Sri Sailam project. It comprises of any anti-cut constructed in Karnataka in 1955 across the rivers to
Tugamdra, Tugamdra, and 143 kilometer long left bank main canal. The initial 42.6 kilometer of the canal lies in the Karnataka, consisting of the 12 distributaries serving an authorized एरिया कट ऑफ 2139 एक्ट, यानी इसका कौन सा कमांड है, कमांड एरिया कितना है उसका इंफॉर्मेशन दिया है, कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहा है उसका भी इंफॉर्मेशन इसमें दिया है. ओके. प्रॉब्लम्स इन RDS कमांड. As the source of release of the water supply is located in other state, the timing and amount of water release are uncertain and non dependable. ओके. तो जो भी आपके पास ये कमांड एरिया है उसमें क्या है, वो दूसरे स्टेट में से पानी आता है, इसलिए जितना पानी रिलीज होना चाहिए उतना नहीं होता है, अनसर्टेन है और एंड नॉट डिपेंडेबल. ओके. as water releases are annually reducing in magnitude and cropping pattern in the command area prone to the changes, these changes lead to the following practice. That means क्या है, जितना पानी मिलता है उसके हिसाब से जो भी क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज करना पड़ता है. ओके. वो यहाँ पे प्रॉब्लम है. दिस चेंजेस लीड टू द फॉलोइंग प्रैक्टिस. Concentration of the paddy is head reaches due to the assured water quality and misuse of the initial releases for the land preparation. Mid and tailed and reaches receiving the insufficient water supplies leading to the violation of the command area development. Tenets development of the unauthorized एचियर ड्यूरिंग द खरीफ कल्ट, यानी क्या है कि जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है. ओवर इरिगेशन या जो भी हेड एंड जो भी है कैनाल हेड एंड है, टेल एंड और हेड एंड दोनों आता है. तो टेल एंड में क्या होता है, तो जो भी कैनाल से दूर एरिया है दैट इज कॉल्ड टेल एंड, और कैनाल से नजदीक जो भी एरिया है दैट इज कॉल्ड हेड एंड. तो हेड एंड पे पानी ज्यादा मिलता है, बिकॉज वो मिलता है इसीलिए उसको क्या कहता है, पानी ज्यादा पंपिंग करते हैं, और पानी ज्यादा पंपिंग करते हैं उसके हिसाब से जो भी पानी टेल एंड वालों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. ओके. तो ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि जो भी पानी कंटिन्यूस हमें मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, उसके हिसाब से उसका जो भी अमाउंट है पानी मिलने का, जो भी पानी का क्वांटिटी है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. उसकी वजह से क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ता है. ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम है. ओके. concentration of the paddy in head reaches due to the assured water quality and misuse of initial reaches for the land preparation. तो क्या है, हेड रिचेस वाला जो भी है यानी कैनाल के नजदीक में है वो क्या है, पैडी वगैरह ग्रो करता है, उसके लिए पानी ज्यादा चाहिए. और क्या है, ओवर इरिगेशन करते हैं और लैंड प्रिपेयर करने के लिए भी पानी यूज करता है. इसीलिए क्या होता है, पानी का ज्यादा यूज होने से जो भी टेल रिच वाला है उनको पानी नहीं मिलता है. ओके. मिड एंड टेल एंड रिचेस रिसीविंग इनसफिशिएंट वाटर सप्लाईज लीडिंग टू द वायोलेशन ऑफ द कमांड एरिया डेवलपमेंट. Tenets development of the unauthorized during kharif cultivating in areas and marks for ID, that means irrigated dry crops, cultivating kharif to wheat crop in the areas and mark for kharif ID etc. mainly by unauthorized withdrawal of water, thereby affecting the canal water distribution. That means ये सब मीन्स पानी का जो भी ओवर यूज है, ओवर इरिगेशन है, उसकी वजह से क्या है, पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस प्रकार से होना चाहिए वो होता नहीं है. ओके. इसका लॉस किसको, जो भी टेल रिच वाले फार्मर हैं उसको जाता है. ओके. Due to the insufficient water availability in the tail and stretches, reduced crop acreage are reported, with portion of ID crops subjected to the moisture stress. Insufficient water availability in the tail and stretches
reduces the crop acreage are reported. That means crop जितना प्रोड्यूस होना चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं होगा. ओके उसमें रिडक्शन होता है विथ पोर्शंस ऑफ आईडी क्रॉप्स. आईडी इरिगेटेड ड्राई क्रॉप सब्जेक्ट टू द मॉइस्चर स्ट्रेस. मॉइस्चर नहीं मिलता है इसकी वजह से वहाँ पे जो भी क्रॉप ग्रो होना चाहिए वो प्रॉपरली क्रॉप ग्रो नहीं होता है. इसीलिए जो भी कल्टीवेशन होना चाहिए, जो भी फार्मिंग प्रैक्टिस होना चाहिए और जो भी फार्मिंग होना चाहिए वो नहीं होगा. The actual cropping intensities in the RDS command have been visually identified from the geometrically corrected cloud-free data of Indian remote sensing satellites. LISS-2, that means Linear Imaging Self-Scanner Sensor of the study area, the distributory-wise crop group acreage for the Kharif, Rabi, in 1991 to 92, Rabi 1990 to 91 season have been measured by the grid enumeration technique with concurrent ground verification and combined with the field reported acreage. The crop area are also estimated with the digital interpretation and they compared well with the visual interpreted data. Then irrigation intensities. Figure shows the distributory-wise irrigated areas as assets from the satellite and the field agencies during Kharif 1992 season. It can be seen that the satellite assessed irrigated areas far exceed the authorized area and the field reported areas. The axis predominantly weight cultivated is concentrated in the head ridges and there is a shortfall in the tail end area. Similar observations were made for the other seasons. In table irrigated dry crop is denoted by ID. That means distributory जो भी है उससे कितना एरिया इरिगेट होता है. देन जो भी अलग अलग हेड नेटवर्क्स है, ओके, दैट मीन्स मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, माइनर, सब माइनर, वाटर कोर्स, फील्ड चैनल्स. ओके, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटरी वाइज कौन कौन से एरिया इरिगेट हो रहा है वो इससे हमें पता चलेगा, जिससे हमें इरिगेशन इंटेंसिटी पता चलेगा. ओके, और टेल एंड में कितना एरिया कवर होता है. एक्सेस कल्टीवेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हेड रिचेस. दैट मीन्स हेड रिच है वहाँ पे पानी ज्यादा लोग यूज करते हैं, उसकी वजह से एक्सेसिव कल्टीवेशन होता है. ओके, और टेल रिच में क्या है, पानी कम यूज होता है, वहाँ पे पानी पहुँचता नहीं है, इसकी वजह से कम यूज होता है, तो उसकी इरिगेशन इंटेंसिटी हमें पता चलती है. ओके, irrigation system performance evaluation. An analytical study is conducted for Kharif 92 season to evaluate the irrigation system performance. The daily main canal discharges, daily rainfall data in the command area for the Kharif season, crop acreage estimated from the satellite data have been used for this purpose. The fortnightly crop water requirement for the each crop group, paddy and dry, have been computed taking into account the corresponding crop coefficient, potential transpiration, okay, इफेक्टिव रेनफॉल, फील्ड एप्लीकेशन. जो भी हमें डेटा चाहिए इरिगेशन सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए तो वो हमें रिमोट सेंसिंग से मिल जाता है. ओके, potential evapotranspiration, effective rainfall, field application, conveyance losses based on the location of the various gauges on the main canal. The distributaries have been grouped into 5 groups. The fortnightly irrigation requirement for the different crop groups have been aggregated to determine the corresponding volumes necessary from each distributary group.
Initially, fortnightly irrigation requirement for the different crops were computed from the areas obtained from the field authorities and then were found to be far below the corresponding water releases. Figure 1 shows the monthly irrigation water requirement computed from the areas obtained using the satellite data. तो क्या है, आपको मंथली इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट कोई एरिया का हमें फाइंड आउट करना है तो वो हमें सैटेलाइट इमेजेस पर से पता चलेगा, और एज वेल एज सैटेलाइट का जो डेटा है उस पे से पता चल रहा है, एज वेल एज द फील्ड रिपोर्टेड एरियाज एंड fortnightly water resources for each distributed group during the kharif. It can be observed from the figure 1 that irrigation demands of the satellite assessed areas more or less fulfilled by the corresponding water releases. कहाँ पे कितना पानी पहुंचा है, कितना इरिगेशन हुआ है, ओके, कितना इरिगेशन डिमांड है, कितना पानी रिलीज हुआ है, जो भी डेटा चाहिए वो सैटेलाइट मंथली को कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है, जो भी डेटा चाहिए वो हमें रिमोट सेंसिंग से मिलता है। ओके, इरिगेशन इंटेंसिटीज, यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर एंड यहाँ पे क्या है एरिया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर इतना पानी, ये क्या है ऑथराइज पैडी, ऑथराइज आईडी, सैटेलाइट एसेस पैडी और सैटेलाइट एसेस आईडी। ओके, तो ये है जो ऑथराइज्ड पैडी, देन ऑथराइज्ड आईडी, सैटेलाइट असिस्ट पैडी एंड सैटेलाइट असिस्ट आईडी। तो ये सब डेटा है, कितनी इरिगेशन इंटेंसिटीज मिली है, कितना पानी प्रोवाइड किया है किस एरिया में, तो वो सब डेटा चाहिए तो हमें रिमोट सेंसिंग से मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी नंबर ये है, ऑथराइज्ड एरिया पैडी आईडी, देन अगेन फील्ड रिपोर्टेड एरियाज, ओके, और सैटेलाइट, ये इतने एरिया में पानी देना था, फील्ड रिपोर्टेड एरिया, फील्ड रिपोर्ट से इतना हमें एरिया में पानी दिया है, ओके, इतने एरिया में पानी हमने प्रोवाइड किया है, और सैटेलाइट इमेजेस जो भी है उसमें से पता चलता है कि इसमें ये इतना पानी यूज हुआ है। ओके, थैंक यू।